Hello, Assalamu alaikum. How is everybody? I hope that everybody is good and doing well wherever you are. I hope that you are in a good state of your health and आप लोग जहाँ पर भी हैं प्लीज़ मेरे लिए दुआ करते रहें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सबसे पहले जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर वापस आएँ और आकर मेरी वीडियो देखें क्योंकि आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए those who are thinking to bring their families in the UK as a nurse. While you are working as a nurse, how you can bring your family. I'm going to explain today everything step by step. So stay tuned guys and watch my complete video. So being a mother, I can completely understand your feelings, your pain, that if you will come along to UK and you will leave your kids there. So once you will be here, you wanted to complete the process as early as possible, and it's just like you wanted blink of your eyes to be finished it, and it should be seem like a fast track process. What is going to happen that you need to go to the UK website, that is gov.uk. You have to go there, and there are some options that dependent visa, you are living in UK and applying for your dependent, or you are the one dependent applying for the visa based on somebody who is already working in the UK on sponsorship or something like that. So you have to go to that website and you have to apply there. So what we have to do, we need first of all the documents, that is passport that should be valid if you are adult, if you are kid, whatever you are. So it needs to be valid at least 6 months. And the second thing is that we are going to require is we have to do the TB test if you are coming from Pakistan. TB test is mandatory for those who are more than 18, but if you will have a look on gov.uk website, they did not mention anything for the kids under 11 especially. But as you are coming from Pakistan, please keep it in your mind. It is somehow extra expensive, but it is not matter when you are applying already and you're spending already a lot of money for the dependent visa and the stuff related to that. So just go ahead and do the TB test also for your kids. What is going to happen if you will not do the TB test? Might be your application will be approved, or maybe you will have a 60% chances that application will be approved, but still on the other hand you will have 40% chances that it can be rejected at any point, just because of that the kids does not have TB test. So just for the safe side, just do the TB test for your kids as well, who are whatever their age is. Just do it if they are going to travel from Pakistan, or if even they are in any other country but in last 3 years they have traveled to Pakistan for some reason and they stayed there more than 2 to 3 weeks. So going back to the point that the TB test for the adults, it will cost you 15,000, and for the kids it will cost you 11,000 per person. So when you are going, just keep in your mind that kids needs to have a TB test. Just do it, okay? Because for your kids, they are not going to take any x-rays, they are not going to take any test, any blood or anything. They if the kid is less than 11 years old, they will not do the radiology for them for the safety purposes. They will just go there to the center and the doctor will assess them. They will ask from the father or mother who will be with them at that time, does they have any sign, symptom, cough, fever, anything, whatever it is related to the TB. They will just examine the chest and they will just give a clearance certificate. They will not do anything. At the same point, they will provide you the certificate of clarification that you are okay to travel to UK. So that is about TB testing. If you're coming from Pakistan and you're adult, more above 18 years, so obviously you are going to need your ID card, valid identity card. And if you are a kid less than 18 years, they can ask you the pay form. And nowadays it is, I think the system in Nadra, they are just doing the ID cards from the beginning, so you can use that as well. And if you have infant or children, they are going to ask the birth certificate, obviously for them, those who does not have yet the ID card. So make sure that you have the birth certificates. And if your kid was born, I'm just going to give you my example that one of my kid was born in Pakistan, so his birth certificate was obviously in Urdu, and one of my kid was born in Saudi Arabia and his birth certificate from Saudi Arabia was in Arabic. So I need to translate it in English so they can go through it easily, and there will be no any point where they will stuck for the rejection of my dependent visa for
any reason, any possible, any silly reason. So this is just to keep in your mind what documents you need to be translated. If you have any documents that is going to your file for the visa application, translate it beforehand and instead of stucking it somewhere for rejection. Next point is, if you are going to apply, or your spouse is going to apply as a dependent on your sponsorship, so they have to provide them the marriage certificate. Obviously they will not leave that. And the same thing again, if the marriage certificate in Nadra, we know our हमारा जो निकाह नामा है पाकिस्तान वाला, that is called marriage certificate, obviously everybody knows, but make it sure that that nikah nama is translated in English form through Nadra and it is computerized. So that paper is going to used basically. Maybe they will use that copy of that nikah nama thing as well. And very important thing, if you are married more than 2 years, so might the UK embassy is not going to ask you any proof. But if you are married less than 2 years, in some countries they are asking proof of marriage, that you stayed 2 years together. So in that case you can provide them your marriage pictures, your pictures that you stayed together of different events. If you have, you can provide them, but if you do not have, I'm afraid that is going to affect your application status. But if your marriage is already been 10 years ago and you are married already long time, might they're not going to ask. In my case, for example, I was been married like 10 years ago and they didn't ask anything for us. So but in some countries they are going to ask, even it is not 2 years, even it is more than 2 years, whatever it is, sometime they're asking. So just keep in your mind and keep the things ready in case if you will need it. Most important thing based on that you're going to apply your dependent visa, it is your sponsorship letter that you came here and who is sponsoring you. For example, I came here as an NHS nurse, so NHS provides me a sponsorship letter for 2.5 years or sometimes 3 years, depends. It can vary from person to person. So my sponsorship letter is going to be attached with the application of my dependent, and my visa paper on the passport, the picture of that visa paper is going to attach with the application of my dependent, and my BRP card is going to attach with the application of my dependent. These three things that is going to be neat from my side, that is my sponsorship letter, and the second thing is the visa paper copy from my passport, and the third thing is the BRP card, that is biometric residence permission card that I received when I came here. And how you're going to apply, now you have to go to the gov.uk. आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन किसी भी मिस्टेक से बचने के लिए कि अगर कोई एक भी मिस्टेक हो जाती है एप्लीकेशन में तो कहीं पे भी ये स्टक हो सकती है, कहीं पे रिजेक्शन आ जाती है। प्रेफर किया था कि हमने किसी एक एजेंट के थ्रू काम करवाया था। मैं आपको बहुत ही काबिल एजेंट हैं और उन्होंने हमारी काफ़ी हर स्टेप पे उन्होंने हमारी हेल्प की और अल्हम्दुलिल्लाह माई डिपेंडेंट वीज़ा आई मीन वाज नॉट रिजेक्टेड एट एनी पॉइंट एंड एवरीथिंग वाज कंप्लीट एंड आवर एप्लीकेशन वाज ऑल गुड फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू अल्हम्दुलिल्लाह। सो आप लोगों ने अगर तो उस एजेंट का आपको नंबर चाहिए एजेंट का, मैं आपके साथ उनका कंप्लीट डाटा नंबर शेयर, उनका फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट्स और ये वो चीज़ें दे देती हूँ। अगर आप लोगों में से किसी को भी कोई हेल्प चाहिए तो आप लोग उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैंने बहुत सी एजेंसी से पूछा था, जिस एजेंसी के थ्रू मैं आई थी वो लोग भी ये सर्विस प्रोवाइड कर रही थी, इंडिया की एजेंसी थी। 2-3 और भी लड़कियाँ मेरी फ्रेंड्स थी, उन्होंने किसी एजेंसी के थ्रू किया। अच्छी चीज़ ये है कि आप पाकिस्तान से हैं तो पाकिस्तानी कोई शख्स ऐसा मिले जो आपको गाइड करे चीज़ों के लिए, तो वो ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा। तो ये ट्रस्टेबल लोग हैं कि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ ऑलरेडी पहले भी कि पाकिस्तान में मुझे किसी पे ट्रस्ट नहीं है, लोगों पे लोग पैसे बटोरने के लिए वहाँ पे बैठे हुए हैं और काम नहीं करके देते। लेकिन इनके बारे में मैं आपको कंफर्म बता सकती हूँ कि ये ट्रस्टेबल है, आप इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं अगर आपको अपना काम करवाना है तो। अब जिस टाइम पे आपने gov.uk पे जाके अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है, सारा कुछ अगर तो आप कंपनी के थ्रू किसी एजेंट के थ्रू जिनका मैंने आपको रेफरेंस दिया उनसे फॉर एग्जांपल उनसे करवा रहे हैं तो वो ही आपकी एप्लीकेशन को फिल कर देंगे, सारी चीज़ें उसमें फिल करेंगे, पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ, जो चीज़ें उनकी रिक्वायर्ड है आपने। उसके बाद आपको पर एप्लीकेशन जब आपने एप्लीकेशन सबमिट करनी है तो पर एप्लीकेशन आपकी एक फ़ीस है। जब आप NHS में एज अ नर्स या डॉक्टर या किसी भी फील्ड में आपके पास स्पॉन्सरशिप होता है तो आपको जो हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ सरचार्ज जो होता है NHS का, वो एग्जम्पशन होती है NHS के एम्प्लॉयज़ को और उनके डिपेंडेंट्स को। तो जैसे मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड जब आए थे तो मैंने किसी की भी NHS की इंश्योरेंस की फ़ीस पे नहीं की है, मैंने सिर्फ वीज़ा एप्लीकेशन की फ़ीस पे की है
जो कि पर पर्सन मेरी 262 थी। 3 लोगों की 800 पाउंड फ़ीस जो है वो मैंने पे की थी। और उसके बाद जब आप फ़ीस पे कर देंगे तो साथ ही एक नंबर जनरेट हो जाएगा, आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यही एक सिर्फ है, आपने फिजिकली जाके कहीं पे भी कोई पेपर सबमिट नहीं करवाने। साथ ही आपको ईमेल आ जाएगी कि आपकी एप्लीकेशन gov.uk में वीज़ा एंड इमिग्रेशन सर्विसेज में सबमिट हो गई है। अब आप जो है फिंगरप्रिंट्स का टाइम ले लें। फिंगरप्रिंट्स आपने अपने एरिया में जो फिंगरप्रिंट्स वाली जगह है वहाँ पे आपने उनका टाइम लेना है। अब लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, कराची में है और एक मीरपुर में भी है। अब फिंगरप्रिंट्स का टाइम काफ़ी दूर दूर का मिलता है, तो फिंगरप्रिंट्स का आपने टाइम ले लेना है। जब आप फिंगरप्रिंट्स का टाइम लेंगे तो वो पर पर्सन मैंने 51 पाउंड पे किया था, तो आप लोगों को भी ऑब्वियसली ऐसा ही होगा। पर पर्सन हर एक की डिफरेंट अपॉइंटमेंट है। 3 रेफरेंस नंबर पे तीनों का आपको सेपरेट अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। जैसे आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे, साथ ही आप ऑनलाइन पेमेंट कर देंगे। किसी को पैसे नहीं देने तो आप बेशक मत दें, आप अपने अकाउंट से खुद उसकी लिंक लेके खुद उसकी पेमेंट कर सकते हैं। कोई इतना डिफ़िकल्ट काम नहीं है। आपने अपॉइंटमेंट ले ली, जिस दिन और जिस डेट की आपको अपॉइंटमेंट मिली, आपने ये सारी डॉक्यूमेंट्स, ऑब्वियसली आप जब एजेंट से करवा रहे हैं तो आपके जाने से पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड कर देंगे। और जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो ऑलरेडी सर्विसेज वालों के पास जो gov.uk की ऑफिस है, जिसको VS ऑफिस बोलते हैं, VS ऑफिस जिसको बोलते हैं, उनके पास ऑलरेडी आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपलोडेड होंगे। तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे, आप अपना अपॉइंटमेंट दिखाएंगे, अपॉइंटमेंट है हमारी, वो आपको अंदर लेके जाएंगे। आपके डॉक्यूमेंट्स दोबारा से आपकी फ़ाइल सारी चेक होगी और फिर आपको ऑप्शन पूछेंगे, आपका पासपोर्ट ले लेंगे आपसे और आपसे फिर ऑप्शन पूछेंगे आपको करियर सर्विस चाहिए या फिर आप खुद आके बाय हैंड रिसीव करेंगे। कुछ भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, करियर सर्विस भी। और जब जो NHS के स्पॉन्सरशिप के लोग हैं ना, यूजुअली डिपेंडेंट वीज़ा जो है वो 18 से 21 वर्किंग डेज़ लग जाते हैं, उसमें जल्दी भी हो जाता है। जैसे मेरे केस में मेरे बच्चों का और मेरे हस्बैंड का 5 वर्किंग डेज़ में आंसर आ गया था, यानी विद इन 1 वीक उनको ईमेल आ गई थी कि आके अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। तो सम टाइम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं भी लगता, सम टाइम 18 से 21 दिन, 21 वर्किंग डेज़, सैटरडे संडेज़ को निकाल दीजिएगा बीच में से, ठीक है, ये भी लग जाते हैं। तो आपको पेशेंसली जो है वेट करना पड़ेगा अपनी एप्लीकेशन के डिसीजन के लिए। आप अगर तो वीज़ा स्टैम्प हो जाता है तो आपको इंशाल्लाह आपको वहाँ पे वीज़ा स्टैम्प कर देंगे कि डिपेंडेंट वीज़ा 90 डेज़ आपके पासपोर्ट पे लग जाएगा। साथ ही आपको अगले दिन ईमेल आ जाएगी कि आपका डिसीजन जो है वो हो गया। आपको ईमेल के अंदर लिखा हुआ आ जाएगा कि आपका वीज़ा मिल चुका है और आप जो भी आपने कोरियर सर्विस सेलेक्ट की थी या इन पर्सन कलेक्शन ऑफ पासपोर्ट सेलेक्ट की थी, तो बोथ केसेस में उसी तरह से आपको ईमेल आ जाएगी कि आप ईमेल पहले आ जाती है और उसके 2-3 दिन के बाद जो है वो पासपोर्ट आता है। तो ये एक मतलब इतने दिन लग जाते हैं, लेकिन आइडियली जिस दिन आपको ईमेल आ जाए उस दिन आप अपनी टिकट जो है वो देखना शुरू कर दें और अपनी टिकट करवा सकते हैं। दैट मीन्स कि कमिंग 2 to 3 डेज़ यू आर गोइंग टू रिसीव योर पासपोर्ट। अगर कोई और अनटिल अनलेस कोई ऐसी स्ट्राइक या इस तरह की कोई चीज़ें नहीं है या बीच में कोई हॉलीडेज़ नहीं आ गए, वो फिर एक अलग ये थी जनाब आज की वीडियो। आप लोग UK आ रहे हैं इंशाल्लाह, तो आप लोगों को ये सारे प्रोसेस का पता होना चाहिए कि ये किस तरह से करवाना है। क्योंकि मैं जब आई थी तो मैंने काफ़ी डिग आउट किया, इधर उधर से पूछा 1-2 लोगों से, और फिर जस्ट जिन एजेंट की मैंने डिटेल शेयर किया, ये मेरे हस्बैंड के कुछ जानने वाले थे, इनके थ्रू फिर मैंने सारा वीज़ा विल बी स्टैम्प्ड। योर डिपेंडेंट्स हैव टू मूव विद इन 90 डेज़ फ्रॉम वेयर एवर दे आर। डिफ़िकल्ट नहीं है, सुनने में शायद लग रही हैं लेकिन बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सो डोंट वरी। और वैसे भी आपको जहाँ कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो आप मैसेज कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैंने आपको जो नंबर शेयर किया आप इनसे भी ज़रूर कांटेक्ट करें, ये भी आपकी हेल्प करेंगे। ऑब्वियसली अपनी सर्विसेज प्रोवाइड आपको कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू। तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, होपफुली किसी की हेल्प हो सके। नॉट स्पेसिफिकली कि कोई नर्सेज हैं, बाकियों के लिए भी वीज़ा का प्रोसेस बेसिकली सेम ही है। तो आप वीडियोस अपने लिंक्स में प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और नेक्स्ट टॉपिक को भी रेज कीजिएगा ताकि मैं वीडियोस बना सकूं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, टाटा, बाय बाय।